अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंटिन्यूइंग द सेम स्टोरी, आज थोड़ा सा हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें प्री रीडिंग कुछ दिया हुआ है हमें। माटिल्डा इज़ अनहैप्पी बिकॉज शी हैज़ बीन लिविंग ए पुअर लाइफ। सो हियर वी कम टू नो द नेकलेस में एक कैरेक्टर है, दैट इज़ माटिल्डा. शी हैज़ बिग ड्रीम्स बट नो मीन्स टू रियलाइज दोज ड्रीम्स. And the character is like, she wishes for certain big things, or she has some aspirations that I should have these things, I should have that things, but she doesn't know how to make them come true, which is the cause of her unhappiness. अब एक चीज़ है, जितना बंदा ज़्यादा डिज़ायर रखेगा उतना उसको, अगर उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतने एवेन्यूज़ नहीं है, उतना रेवेन्यू नहीं, उतना पैसा नहीं है, तो वो नेचुरली बहुत दुखी रहता है. Matilda is invited to a grand party. She had a beautiful dress but no jewelry. अब माटिल्डा को एक invitation मिलता है एक बहुत बड़ी grand party के लिए. And what happens? She had a beautiful dress but she had no jewelry to put on so that it will match the dress and she will look good. She borrows the necklace from a friend and loses it. What happens then is really ironical. तो क्या यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है कि ये अपनी दोस्त से एक हार लेती है, नेकलेस लेती है, एंड देन फाइनली व्हेन शी कम्स फ्रॉम द पार्टी शी लूजेस इट. शी फाइंड्स दैट नेकलेस इज नॉट देयर, और उसको लगता है वो गुम गया होता है. एंड देन देयर स्टार्ट्स द मिजरी ऑफ हिज लाइफ. इसकी ज़िंदगी की तबाही फिर स्टार्ट हो जाती है. रीड आउट द स्टोरी एंड फाइंड आउट द कोर्स ऑफ इवेंट्स दैट लेटर शेप माटिल्डा's लाइफ. ठीक है. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. ठीक है. बोलते हैं ये वो एक ऐसी औरत थी जो काफ़ी खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन पैदा कहाँ हुई थी? शायद गलती से एक ऐसे घर में पैदा हुई थी विच वेर नॉट, दे वर नॉट दोज रिच जो इसकी प्रिटीनेस को कुछ चीज़ें ऐड करते. सो शी वॉज बोर्न इन ए क्लरिकल फैमिली वेर हिज फादर वॉज परहैप्स ए क्लर्क. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. क्या अब now he shows his mind, कि इसका mind क्या था? इसको पता थी that his father won't give her dowry. She had just shunned all her hopes, all her means of becoming known to people, and she was also knowing the fact that she will be married to a very low average man, not to a rich or a distinguished person. And she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the Board of Education. She was simple but she was unhappy. और इसने अपने आप को भी, जब इसके बाप ने इसकी शादी कर दी, एंड ही वॉज ए क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो कहते हैं वहाँ से आफ्टर शी वॉज मैरिड हर लाइफ वॉज वेरी सिंपल बट इनहेरिटेंटली अंदर इनसाइड शी वॉज वेरी वेरी अनहैप्पी विद द थिंग्स. She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. क्या बोलते हैं कि अंदर से बहुत ही दुखी थी, बहुत ही परेशान थी, बहुत ही अपने आप के साथ कभी बात भी करती थी, या what he has actually guided me percent shown here, he has just tried that, उसने वो उसके दिमाग में घुस के उसकी बातें बाहर निकाली हुई हैं जैसे. तो what she felt for herself was कि she thought of herself that she could have been born in a very rich family where she could have had every luxury of life, every dress, every jewelry, every car, and she could have been married to a very rich and distinguished person. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. क्या बोलते हैं ये जहाँ पे इसका शौहर रहता था, where she was now, तो दैट वॉज अ वेरी पुअर अपार्टमेंट विद शैबी वॉल्स, नॉट गुड लुकिंग वॉल्स, वो काफ़ी पुराना घर लग रहा था, एंड द वोल्ड चेयर्स, नॉट अ फ्रेश फर्नीचर वॉज देयर. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. ठीक है. तो ये चीज़ें जब वो देखती थी ये काफ़ी दुखी हो जाती थी और उसको बड़ा गुस्सा भी आता था. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." क्या बोलते हैं जब ये बैठती थी अपने हस्बैंड के साथ डिनर करने के लिए, तो कोई ड्रिंक होती वहाँ पे ड्रिंक. बोलते हैं जब वो इसका शॉवर उसको खोलता था वो बोलता था मैं इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं जानता था. तो दैट मीन्स ही वॉज अ पुअर मैन. ही वॉज नॉट नोइंग द डेलिकेसीज, कौन कौन सी चीज़ें हैं, द डेजर्ट्स, क्या 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 चीज़ें दुनिया में और अवेलेबल हैं. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर. She thought of the exquisite